So am I audible now? Can somebody confirm? We can get started then. If at all I'm audible as well as screen is visible. Great. So let's get started. So bear with me. Actually, I'm doing this live stream for the first time, so I'm also even exploring the options. So going forward, we should have smooth, just give me a sec. I'm just trying to adjust the screen actually, so that you can see the chart on a wider. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो देखते हैं कि पहला क्वेरी किसका है लाल पाथ लैब के लिए व्हाट टू डू सी व्हाट टू डू आई कैन नॉट टेल बिकॉज everybody will have their own risk appetite so let's see कि लाल पाथ लैब में क्या चल रहा है so my screen is visible I am assuming लाल path lab we will start with a bigger time frame so if at all यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो we have given a ब्रेक डाउन ऑन लार्जर टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग एक देख रहे हैं इस वीक का तो जो कैंडल है दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश सॉरी बीरिश वॉल्यूम्स भी हैं थोड़ा सेलिंग में वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज एज पर द प्रीवियस वीक्स सो नाउ व्हाट इट इज शोइंग इज immediately this can be considered as a support zone so what is the crucial point for लाल पाथला going forward is कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड 14th ऑफ जून सो इफ एट ऑल वी डू नॉट कंटेन दिस फॉल विद इन दिस जोन सो 2600 से लेके 3000 का ये 400 पॉइंट्स का एक रेंज में है दिस सपोर्ट इफ एट ऑल वी सी एनी बाउंस फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस रेंज दैट इज जहाँ पे हमने क्लोज दिया इस वीक का उसके ऊपर से अगर इफ एट ऑल वी सी एनी काइंड ऑफ रिवर्सल ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम and it sustains for a if at all daily close happens above this zone it can be considered as a reversal so वहां से it can be again seen resuming its trend otherwise right now for the time being it looks like a kind of in a grip of strong bears so this is about Deepak Nitrite and Tata Elxsi. So Tata Elxsi, I have shared my views every time in the recent past, very recently for few days also, continuously. सो दीपक फर्टिलाइजर ने भी एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है वेरी बुलिश ऑन चार्ट्स सॉरी लेट इट मी सी इट्स दीपक नाइट राइट और दीपक request everybody to please be slow in your questions so that I can see and I can anyways let's see so both सो दीपक का अगर हम लोग देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो दीपक ने जो है इस चैनल का ब्रेकआउट दिया और इसको हम एक फ्लैग पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज द पोल ऑफ द फ्लैग
सो इसके बाद में इट हैज़ गिवन अ वेरी डिसेंट लास्ट वीक जो इसने ब्रेकआउट दिया है, और अभी जो है ड्यू टू दिस टर्बुलेंट टाइम्स एंड वॉलेटाइल टाइम्स इन द मार्केट, सो हो सकता है कि इसका जो है ये फ्लैग का या चैनल का जो है एक हायर ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को टच करने आए. It can be a possibility, which should be a good level to think. Or if at all it was Deepak Nitrite, so we can see both. So Deepak Nitrite, right? So Deepak Nitrite जो है ये एक kind of इसने फिर से एक पुल बैक लिया है, एंड इफ एट ऑल अगर ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आता है, सो देन इट्स अ ग्रेट साइन. सो यहाँ से इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्यूमुलेशन जोन. From 2000 till 2300 should be a very good supply, sorry, demand zone as well. और उसमें हम लोगों को एक 21 पीरियड का कंटिन्यूअस जो इसको सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा. सो दिस कैन बी द गुड accumulation zone for it. So then we can see which is the next one. Tata Alexa, I have shared it daily basis. तब पिछले कई दिनों से मैं इसका शेयर किया हूँ. I've been sharing this. I've shared it in the past in my our newsletter as well for. So इसमें भी देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक, और उसके बाद अगर ये देखेंगे दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स. सो जो कि इस वीक में इसने इट हैज़ ब्रोकन इट आउट. तो ये कंसोलिडेशन भी जो है इट हैज़ गॉट ब्रोकन आउट. सो नाउ आज जो देखेंगे एक ड्यू टू द अगर हम डेली का कैंडल इसमें आज देखेंगे, इट मेड अ ऑल टाइम हाई आल्सो 7800 का आज ही. बट टुडे ड्यू टू सम प्रॉफिट बुकिंग विच कैन बी कॉल्ड एज, क्योंकि मार्केट्स में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, सो इट हैज़ क्लोज अराउंड 7200. सो अगर इस ट्रेंड लाइन को या इस प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को अगर आके टच करता, तो दैट शुड बी अ गुड जोन टू थिंक अबाउट एडिशन. सो वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे जो भी चार्ट्स की ऑब्जर्वेशन है, इट्स प्योरली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस. देर इज नो वे इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन. हम लोग यहाँ पे सीखने के पर्पस से इस सेशंस को करेंगे, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स ऑन अ डेली बेसिस. सो इंटेंशन इज के वो सब चीज़ का अगर रिप्लाई डीएम्स के थ्रू नहीं हो सकता ट्विटर पे या पर्सनल उस पे, सो वी कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म. सो आईजीएल, आईजीएल में जो है, आईजीएल इज इन अ वेरी डाउन ट्रेंड. सो आईजीएल के लिए तो आई विल सी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके लिए हम लोग 200 का पीरियड का मूविंग एवरेज देखते हैं. So see, if on a weekly, it is just on the verge of touching it. And if we see by the history, so every time it has bounced back after touching this. So it's just like, matlab, most probably based on the past trend and past history, it is likely कि अगर हमें ये 400 का जो है एक immediately strong support zone दिखता है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिख रहा है कि 400 जो है एक 390 टू 400 का जो एक जोन है. So this can be considered as a zone. सो 390 के आसपास से 390 से लेके 400, अगर ये जो कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है 200 पीरियड मूविंग 200 वीक मूविंग एवरेज का, सो टिल अ टाइम रिवर्सल नहीं मिलता तो देयर इज नो पॉइंट टू थिंक अबाउट एडिंग. और वैसे भी अगर एक और भी चीज़ दिख रही है इस चार्ट में, तो ये एक चैनल को भी, चैनल के भी लोअर एंड पे ही है. सो दिस इज हाउ इट इज. सो मतलब सारे पैरामीटर्स इसके लिए फेवरेबल है. लो रिस्क सेटअप है, बहुत ही लो रिस्क सेटअप है. ओनली थिंग इज अपार्ट फ्रॉम टिल द टाइम अगर आपको रिवर्सल नहीं मिलता है, तो देर इज नो पॉइंट, यू कैन नॉट एंटिसिपेट कि कहाँ से रिवर्सल आएगा. इससे नीचे भी जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल नीचे से जाके आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. सो लेट दैट रिवर्सल कंफर्मेशन गेट बी देयर ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, तो उसके बाद में देख सकते हैं. सो देन इट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर.
If at all I'm not audible or the screen is not visible, I'm assuming the same. So please ping me, and if everything is fine, then also let me know through the chat window so that we can continue. सो सोनाटा का भी देख रहे हैं तो एक डिमांड जोन के आसपास में इसने बाउंस लिया है वीकली पे, बट एक जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस काइंड या सप्लाई जोन दिख रहा है वो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे कई वीक से जो है इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग। सो टिल द टाइम 915 से 950 की जो एक रेंज है वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर डेली क्लोजिंग बेसिस के बाद सस्टेन करते और वीकली क्लोज मिल जाए तो दैट विल बी अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द ट्रेंड टू बी इन द रिजम्पशन in the coming days. So till the time it is getting exactly rejected from the similar supply zone, so healthy consolidation is going on right now for Sonata. Borosil Renewable. Borosil Renewable is also in a decent run up in the recent past. सो इसमें भी है, इट्स अ वेरी गुड हेल्दी साइन। अच्छे काउंटर्स पे आपको कंसोलिडेशन ज़रूर देखना चाहिए फॉर देयर नेक्स्ट लेग ऑफ अप रन और अप मूव। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है टिल द टाइम इट इज कंसोलिडेटिंग एंड इट्स आई थिंक 13 पीरियड मूविंग एवरेज पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। इफ एट ऑल इट कम्स नियर बाय टू 580 जोन और वहाँ पे डिमांड जोन का भी है तो 580 के आसपास इट कैन बी a decent accumulation zone. But one thing I will try to request everybody is you should not be in a hurry to find the top and the bottom in the markets. So bottom और top जो है वो बनते हैं लेकिन identify करना बहुत मुश्किल है। Nobody can with 100% certainty say मैंने bottom find कर लिया या मैंने top find कर लिया, बिकॉज कहाँ पे टॉप होगा, कहाँ से रिवर्सल आएगा, कहाँ से बॉटम बनेगा, कहाँ से रिवर्सल आएगा, लेट मार्केट्स गिव यू दैट कंफर्मेशन। उसके बाद अगर 2-4% ऊपर हायर प्राइस पे भी लेना पड़ेगा तो इट्स बेटर, योर probability of going into a right trade will be much more. So this is once, and don't go in all in these kind of turbulent markets. TechChem and Polycab. So IT to as a full Nifty IT has seen a decent kind of a pullback. So due to this, which you are seeing, all the major IT companies are seeing this pullback. So इसमें भी यही है कि 13 पीरियड का तो जो मूविंग एवरेज के आसपास है थोड़ा वहीं पे रोटेट कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन, और अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो दिस इज अ वेरी डिसेंट जोन। सो इस जोन में अगर आपको 1470 से लेके 1590 के आसपास में ये जो जोन है, यहाँ पे कहाँ से रिवर्सल मिलेगा नोबडी कैन से विद सर्टेनिटी, बट दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ अ वेरी डिसेंट जोन in terms of a favorable risk reward. If you see any kind of a further fall in this zone can be kept in the view for identifying the exact levels. So Polycab भी it has been just due to this market correction, अगर Polycab देखेंगे तो Polycab has recently made a all time high towards 2700 plus. So वही है कि already इसने भी कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक, एंड ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट तो अभी देखने को मिल रहा है कि इसमें भी फॉल आ रहा है, बट दीज आर द काउंटर्स व्हिच विल बी द फर्स्ट वंस टू रन व्हेन द ब्रॉडर मार्केट इज बीइंग सपोर्टेड। ओके, सो अगर ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो यू विल सी दीज काउंटर्स टेकिंग द लीड टू रिज्यूम देयर अप ट्रेंड। कोठारी पेट्रो, so Kothari Petro we will see. Kothari Petro में तो है it has moved very much far away from the moving averages also. So I am a person who will plan for a conservative entry. Okay, so this is just my point of view. So the things which have moved so fast in the recent past, डेली में भी देखेंगे तो काफी अच्छा दिख रहा है, तो पुल बैक थोड़ा है,
If at all you are getting anything towards the mean, that is mean reversion candidates which come to their moving averages after a decent run up, तो वो एक low risk entries रहता है. So try to plan out the entries in such a way that you let those counters come to their means. Mean reversion अगर आपको मिलता है तो इतनी दूर आगे ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं तो your risk reward is not favorable. So where you will means get stuck. See, somebody who has bought here, considering this pin bar or a hammer candle, कि lower level से we have seen the reversal. और buying आया है. So अभी के लिए short term के लिए तो यही है कि in case this is the zone, right? यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लेके गया है और आज भी अभी जो दिख रहा है इसने यहीं से सपोर्ट लिया है. So if you get this into this zone of something like 85 से 92 93 के बीच में, this should be at least your some sort of favorable risk reward zone. So it can be thought about. So Divis Lab तो मतलब एक portfolio stock है अगर long term investors के लिए तो these are the best opportunities to grab them at the bargaining prices. So overall जो है इसमें भी weak trend है for the timing. Overall sector ही जो है वो perform इतना नहीं कर रहा है. It has been subdued for since a long time now. So ये एक symmetrical triangle था which has I've already seen the chart earlier. So उसका भी आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है इस वीकली क्लोज के बेसिस पे. बट मतलब जो इन्वेस्टर हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ग्रैबिंग दीज जेम्स एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. यू विल नॉट गेट द गुड न्यूज एंड द गुड प्राइसेस टुगेदर. इट हैज बीन सीन एंड विटनेस्ड मल्टीपल टाइम्स. सो अच्छा प्राइस, अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ में नहीं मिलेगी. तो जब खबर बुरी है तो अच्छी दाम पे मिलेगा और जब अच्छा दाम मिलेगा तो खबर अच्छी नहीं होगी. So this is based on an individual risk appetite, but this is a very much portfolio stock. So no second thought about it. Then is Shopper Stop. Stop. तो शॉपर स्टॉप ने काफ़ी टाइम के बाद में 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास इसको क्लोज अबव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है उसके ऊपर. बट वन थिंग टू सी इज कि इस जोन में उसको बार बार रेजिस्टेंस या सप्लाई मिल रहा है, राइट? So if we see here, so here the law of polarity, which I normally talk about in our daily summary videos on our YouTube channel. So you can go and watch our previous videos there. So where you will get this law of polarity very much clarified. So अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली जो है इसके लिए एक सपोर्ट था जो कि फ्यूचर में अब रेजिस्टेंस बन गया वंस इट ब्रोक दैट जोन. और अभी फिर से इसको दो बार जो है लास्ट के कुछ एक वीक्स में, ये दिस वाज द वीक ऑफ नवंबर, 15th ऑफ नवंबर एंड दिस इज द करंट वीक. सो यहाँ पे 2 ढाई महीने में और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. दिस इज हेयर एंड दिस इज हेयर. सो अगर ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते, सो इट कैन सी some sort of resumption of the trend or the trend change has happened, which we can see कि हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हैं काफी टाइम से. बट ये जोन क्लियर होना बहुत जरूरी है और अगर इसके ऊपर if 485 gets crossed, then there is a high possibility of the trend to be continued in the upside. But let this zone be getting cleared out. It has been supply zone since long. So then is Astra Micro. Just give me a sec. Let me put my charger. One sec. So we have to see Astra Micro. Again, it is in a
consolidation, or maybe it can be seen as a breakout retest. Let me see what exactly the chart is telling. ओके 190 पे इसने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है. See, right now what is happening is it is finding a strong supply within this zone. This is one thing, and this is the second thing. So 240 से 245 के 55 के बीच में it has been facing a strong resistance. और फिलहाल अगर 218 होल्ड कर रहा है, मतलब 215 तक, तो एटलीस्ट यू कैन सी कि सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन इज हैपनिंग. अगर 215 ब्रेक होता है ऑन अ लोअर साइड, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग 190 भी इसमें देख सकते हैं इन द कमिंग फ्यू डेज. सी विप्रो का जो है बिना देखे चार्ट मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक 600 का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विप्रो में, एंड इट हैज बीन नियर बाय टू दोस जोन्स ओनली. See, earlier I think I saw somewhere chart for some request. So chart is already plotted here. See, this is what it has really been into that strong demand zone. So we I think have seen this chart here only. उसके बाद इस वीक का भी जो हम लोग देख रहे हैं, it has given a very subdued close. सो यहाँ पे जो है 570 580 से लेके 600 605 का क्लोज है ना, तो 580 से लेके 600 का एक अच्छा खासा डिमांड जोन है. उसका ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है एज पर द, बिकॉज ये वीकली चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है. तो यू आर सीइंग द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मल्टी वीक्स एट दिस प्राइस लेवल्स. सो 580 70 पे आता तो एक बहुत ही लो रिस्क सेटअप बन जाएगा ये. व्हेन वी से लो रिस्क, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां से फॉल नहीं कर सकता, but वहाँ पे there is very minimal to lose in terms of the reward it offers to you. So it can definitely see its previous high in the coming few months, maybe not if weeks, but जो है uptrend का stock है and a very decent support zone पे मिल रहा है. So I am SRKG. I have already shared the लाल path के लिए view. I cannot tell you के what you should do because entries and exits are based on your risk appetite. And I am not the correct person to tell you what to do. I can share what charts are telling. So Carborundum is again a very much uptrend का stock है. Capital goods में sector में revival है, तो abrasives are also required. This is an abrasive company. So see here also again consolidation breakout होने का चांस था, पिछले वीक लगा था, एक फेक ब्रेकआउट हो गया वो. अभी जो है इट इज कमिंग ऑन टू अ वेरी रीजनेबल लो रिस्क सेटअप. अगेन चैनल को लोअर एंड पे आ रहा है, और उसके साथ साथ में जो है आई थिंक इट इज नियर बाय टू 21. हाँ, करेक्ट. सो इफ यू सी हेयर, ये जो जोन है आपके लिए, दैट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट और डिमांड जोन यहाँ पे. सो इस जोन में इट कैन बी थॉट अबाउट वेरी लो रिस्क सेटअप यहाँ पे, सेम तरीके से जैसे हम लोग पिछले उसके लिए व्यू के लिए बात की. सो उसके बाद लाल पाथ लैब हो गया. उसके बाद में व्हाट इज इट नेक्स्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड टिमकेन. टिमकेन इज अ वेरी नाइस स्टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड फॉलोअर्स. सो ट्यूब में और कुछ नहीं, कंसोलिडेशन चल रहा है, साइडवेज है ये, अभी अच्छा रनअप दे चुका है ऑलरेडी. So let the consolidation get broken on a higher side. If you are an investor, this consolidation can be utilized for staggered addition and accumulation. So Timken. So Timken में भी वही है, sideways चल रहा है, थोड़ा consolidation हो रहा है. See, these kind of stocks which have thrown a decent run up, and if you see, it is continuously sustaining at its 21 period moving average. So यहाँ पे जो है ये बड़ा लो रिस्क सेटअप हो जाएगा अगर 100 150 रुपए और गिरता है. So it will become a very decent setup in terms of low risk and high reward. सो पीआई इंडस्ट्रीज अगेन इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक. उसका फॉल जो है वो तो लोग वेट करते हैं कि मतलब
इट शुड बी सी 21 पीरियड का शॉर्ट टर्म के लिए तो इसका ट्रेंड चेंज मतलब वही हल्का बियरिश ही दिख रहा है. बट सी दीज आर द स्टॉक्स विच आर पोर्टफोलियो स्टॉक्स. इसमें कुछ भी न्यूज़ हो या कैसे हो, क्या रीज़न है उसका आइडेंटिफाई करने के बजाय, सो इट हैज़ ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो. और अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो लेट्स सी विच इज दैट, वेयर इज इट इज. सो ये लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, एंड इट इज वेरी मच इन दैट जोन ओनली. So if at all it is coming to say 2400 approximately, it's become again a very low risk setup. Only thing is better chances ये रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दो ना हायर एंड, वो एक सेफ और कंजर्वेटिव एंट्री हो जाएगा. This again will be a conservative entry because your loss will be very limited here if you are playing with a you know low risk setup. बट कंफर्मेशन आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद ही मिलेगी दैट द ट्रेंड हैज रिज्यूम्ड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, प्राइमरी ट्रेंड. हो सकता है कि यहाँ पे काफी टाइम के लिए कंसोलिडेट भी करे. दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. सो मार्केट इज ऑल मैथन रिव्यू, मैथन अलॉयज. ओके, again a consolidating stock, again finding a resistance. So एक kind of symmetrical pattern बनता हुआ दिख रहा है इसमें भी. Again seeing the support lower highs. Let the breakout happen on either of the side, that direction will be getting cleared. It's a volume contraction pattern also here. VCP का भी pattern है. तो let this consolidation, if you're an investor, you can utilize this consolidation for your benefit. But let this cross this zone of around 1120 plus. So it can be considered as a safe bet after that. Consolidation कितना चलेगा, कितने देर रहेगा, nobody can tell. Shivaji is asking sale. Non-ferrous metals are performing well as compared to the ferrous metals, as per the some uh, observation on charts also in the recent past, as well as the news flow also. So it has been again a very much candidate of a VCP, volume contraction pattern. So it's on the very much verge on the breakdown, if at all. So अगर breakdown होता है, अगर 100 से नीचे का weekly close मिलता है, अगर say next week, so first and foremost is it is likely to test maybe on the charts basis something like 85 से 80 के zone में, or even the 200 period moving average is coming around 77. So let's hope कि अगर मतलब broader markets अगर supportive हो जाता है तो metals will also be, at least they have been underperforming for a decent amount of time now after a decent run up. तो वो consolidation चल रहा है. But once and when this consolidation gets over, you will see a decent upside in all the. See, Mastec को तो result basis पे it has seen a huge reaction. Mastec is again a good company. So इस बार का अगर देखते हैं, ये तो रिजल्ट्स का रिएक्शन है कल या परसों में जो डिक्लेयर हुआ है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. 2350 से लेके इफ एट ऑल यू सी 2650 तक 300 पॉइंट्स का रेंज है. सी अगर इतना बड़ा रिएक्शन मिलता है ना, तो सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन इज मच मोर लाइकली एंड एक्सपेक्टेड. सो यू कैन नॉट सी के एकदम से दैट स्टॉक परफॉर्म्स एंड इट विल गो टू इट्स ऑल टाइम हाई. So keep on nibbling it at every fall, these kind of good businesses. बट ऐसा है कि इसमें एकदम से कोई बड़ा अमाउंट इतने फॉल के बाद यू कैन नॉट एंटिसिपेट कि वो फॉल कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक वो कंटेन होगा, कहाँ पे जाके. सो इफ यू आर बुलिश ऑन दिस कंपनी एंड इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ इट और वट एवर इज योर रेशनल फॉर एंट्री, सो इफ दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, सो ये अच्छे कंपनीज को आप स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं. दीज रिएक्शंस आर शॉर्ट लिव्ड.
for long term view. And new gen software. See, on a verge of range breakout, we have already seen this chart earlier on some request. So वही range का breakout होते होते रह गया last week भी, क्योंकि this week it is again a very much volatile week. So अभी फिर से वो बॉक्स के अंदर ही आ गया. We cannot say कि वो कहाँ तक आएगा, lower end तक आएगा, कि अगले week reversal आएगा. So if you are a long term investor, you can keep on accumulating. If you want some quick returns and all that, let this zone of around 670 being taken over on a daily closing basis. उसके ऊपर फिर से still you can see 755, the previous all-time high in the short term. Rakesh ji is asking नौकरी. एक डाउन ट्रेंड में है फिलहाल. एक इसमें भी एक चैनल के बॉटम पे ही लग रहा है, आई थिंक सो. So this week it has broken the channel, and if we see price action wise, again it's at a very crucial support. बट जिस तरह से इसका वॉल्यूम्स भी है इस वीक का सेलिंग का, और जिस तरह से ये बीरिश engulfing कैंडल भी है, it looks like a bit more pressure can be witnessed in this counter in the coming days. Otherwise अल्टीमेटली इसका ट्रेंड जो रिवर्स होगा वो यहाँ पे जाके होगा, जब ये ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करके ऊपर चैनल में एंट्री करता है ना, दैट विल बी अ सेफ एंट्री. मतलब उसमें एटलीस्ट यू कैन बी स्टेड एश्योर्ड के ट्रेंड जो है और मोमेंटम इज बैक. अभी फिलहाल तो ये 200 पीरियड मूविंग, और आई थिंक डेली में तो ये 200 के आसपास, हाँ डेली में तो ये नीचे जा चुके ऑलरेडी 200 से भी. सो देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली, मतलब if at all you want to accumulate at these levels, because there is a lot of risk. Consolidation कितना होगा, if you are an investor then it's fine, but if you are asking for a view for a short term or a trading perspective, this is not the counter to be in. Jamna Auto, have been telling every time, Jamna Auto and JBM both are the candidates for a EV का जो थीम है उसके लिए, they are the beneficiaries. So Jamna is also मल्टी ईयर का ब्रेकआउट के पास में है, दे चुके ऑलरेडी, यहाँ पे दिया है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट अराउंड 105 के आसपास. कंसोलिडेट हो रहा है वही चैनल के अंदर. लास्ट वीक इसमें भी पॉसिबिलिटी थी कि चैनल का ब्रेकआउट देगा, बट अगेन ड्यू टू दिस वॉलेटाइल मार्केट्स, तो यहाँ से फिर से लोअर लेवल्स पे बाइंग देखा गया. इस डेली पे जाएंगे तो बाइंग आया है, आज ही बाइंग आया एक्चुअली, इफ यू सी विद ह्यूज वॉल्यूम्स. सो नाइट स्टोरी प्लेइंग आउट. थीम भी है अच्छी, ईवी की थीम के लिए भी, एंड सेक्टर टेलविंड्स भी है ऑटोज के लिए. लुक लाइक अ गुड डिसेंट अपसाइड कैंडिडेट. So then is NMDC. So NMDC is consolidating after a downtrend. Sideways है इसमें, मतलब there is nothing much to be seen here. 200 period moving average के भी पास है. So kind of it can be avoided for even trading or an investment purpose, whatever is the duration, time duration you are looking out for. Not looks so convincing in this kind of bull market. The stock behavior should be not like this. So let's take another 4-5 questions, or maybe around 11:20 we can wrap it up. 7-8 more minutes. Last few questions please. Raj Ratan and Radico. Radico तो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है और बहुत ही डिसेंट स्टॉक है. These are the times to get. अगर ऐसा कुछ ओवरऑल मार्केट में कुछ fluctuation आता तो these are the best times to accumulate these kind of stocks. Chart is speaking for itself. I don't even need to see and tell anything. You can see by yourself कि continuously it has been taking the support at 21 period, और अभी उसके पास ही आ रहा है.
और प्राइस एक्शन में भी देखोगे तो यू विल सी दिस के दिस इज अ वेरी डिसेंट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। सो और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा दोनों चीज का, तो इन केस यू गेट दिस इन विद इन दिस रेंज, और वॉल्यूम्स भी फॉलिंग, वॉल्यूम्स जो हैं बहुत ही कम है, तो प्राइस इज फॉलोइंग ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स विच इज अ गुड साइड। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्टॉक है, इट कैन बी accumulated on every fall. So KPR Mills is sector leader. अगर टेक्सटाइल सेक्टर को चलना है तो इट्स लाइक KPR Mill, I can in personal view, it's my view, is your Bajaj Finance of your NBFC. It's a very good, see the chart speaking for itself. ये सब जो टाइम है, ये इस मार्केट में आपको सब कुछ ही गिरा हुआ दिखेगा, इवन लीडर्स भी गिरे हुए दिखेंगे। 5-10%, 8% का मूव अगर गिरता भी है स्टॉक आफ्टर 100%, 200% रन अप इन 1 ईयर और 1.5 ईयर, ये सब बेस्ट, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये सारे, केपीआर एंड ऑल दैट, इस पे तो व्यू का बेस्ट लेवल्स। कैम्स एंड जेंसर, कैम्स इज अगेन कंसोलिडेटिंग और साइडवेज स्टॉक है, अभी फिलहाल कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे तो, लिस्ट जेंसर कैन बी, कैम्स को एक बार ये वो सप्लाई जोन क्रॉस करने दो, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। सो जेंसर भी जो है कंसोलिडेट ही हो रहा है, पहले अच्छा रन दिया है, उसके बाद अब काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। सो इट्स मोर लाइक बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के आसपास ही है ये भी। सो अगर 400-420 के आसपास में मिलता है तो विद स्टॉप, ये स्टॉप लॉस हो सकता है इसके लिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो। सो लॉन्ग टर्म व्यू, आई डोंट हैव मच इनसाइट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी और बिजनेस। आईटी का ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है, तो ये एक 380 के करीब जो है, इट कैन बी कंसिडर्ड स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीक्स का सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 2 या 3 वीक्स, 2-3 बार ही टाइम लिया है इस सपोर्ट। So accordingly, you can plan your entries or exit. See, Vishalji, nobody can tell you and charts, why markets are so volatile before budget. It is every time. So you don't have to plan your entry based on any event. This is what I reiterate as per my view. If you're a long-term investor, these are the best times to accumulate the gems at a bargain price. सेल ढूंढने पे मिलती नहीं है, और अभी सेल आया तो you can grab this with both the hands. It continues further, तो that's why you should not go all in. कहाँ पे जाके वो रिवर्सल मिलेगा, कहाँ से बाउंस आएगा, वो नहीं, वन साइडेड, नथिंग टू वरी। पोर्टफोलियो स्टॉक, ग्रीन पैनल, कुछ फॉल देखने को मिलता है, लेट इट कम टू इट्स wonderful stock. Any pullback can be utilized to plan an entry. Dixon for new entry, Munish is asking. Dixon. Dixon is again, right? I've already said in the view. Let me clean the chart first. It's on a weekly zone. See, ये भी consolidate कर रहा. The more it is consolidating, it's the best opportunity for all the investors. They can nibble in within these weeks. कितने week से consolidate कर रहा है? If I zoom it out for further, so you can see that कितने week से, मतलब it has run recently from the past 1.5 year. उसके बाद अभी कितना, around about 3 months से जो है consolidate कर रहा है. So if you are an investor, and this script is basically for an investors, even though it is now an FNO script, but उतना volumes इसमें देखने को नहीं मिलता है FNO साइड पे तो. So I don't consider it as a trading script. तो इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स ऑल एवर टाइम एवरग्रीन. पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिशियरी है ये, ऑल इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स. सो वंडरफुल स्टोरी, इट कैन प्ले आउट इन द कमिंग few years. Maybe last few couple of questions we can take and then we can wrap it up. So Ecrisil and Sumani Home. Ecrisil.
सी एक क्रिसिल ऑल्सो इफ यू सी वही चैनल की स्टोरी चल रही है मोस्टली क्या मिलेगा इसमें जो अगर ओवरऑल मार्केट गिर रहा है ना तो सभी जो स्टॉक्स होंगे जहाँ पे कुछ भी पैटर्न बन रहा होगा वो आपको इस टाइम उस पैटर्न के लोअर एंड पे ही मिलेंगे द सेम इज हेयर क्लियरली विजिबल सी देखो बिल्कुल वहीं पे मिल रहा है लोअर एंड पे और वहीं पे इसका 21 पीरियड का मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है तो अगेन इट्स अ लो रिस्क सेटअप एक वैसे अप ट्रेंड का स्टॉक है इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा कंसोलिडेट हो बिफोर मेकिंग इट्स further resumption of the uptrend. So thank you, Harsh Patel ji, for your feedback. Although I don't have any question, but came here to see learning from you. Doing good work. Thank you so much for your feedback. So Vishal ji is asking, sir, just heard you on space and there was some network. What is that? Network error. So I just about it. I think yeah, it was a space organized by Trinker where they invited me. So I think they will be posting those names and all. So tin plate, Century Enka, and Tata Alexa, yeah, which are looking very much bullish on the charts. And all these charts are already covered on my Twitter timeline because as soon as I see any chart observation, I normally try to post it either on the Telegram or on the Twitter handle. So you can find all these charts on the Twitter or uh, this thing. What is that? Telegram, sorry. So thanks for your feedback, Gautam ji. Probably I cannot take so many of the DMs which come every day कि ये कहाँ इस चार्ट को देख के बताइए and all that. So it becomes very cumbersome for me to see each and every DM and then revert back. So for that purpose only, I thought whatever little I can help others, we can organize some sort of a weekly connect where we can take all those queries in a single go and we can utilize the time also. एक घंटे 1.5 घंटे में काफी अच्छा Thanks a lot, Conrad, for your feedback. Thank you very much, Bharat Bhai, for all the thanks. My pleasure. Anytime. Thanks, guys. So I think it's already 11:20. So let's wrap this up for this week connect. I will upload this video on the YouTube, and maybe you can have a glance. So if you are liking our content, if you feel like our analysis is adding some value in your decision making, so please do not be shy to share, like, and subscribe our videos as well as channel. So अपने friend circle में whosoever is engaged in the markets, you can just share this Twitter handle and all that. So it can be a learning exercise for each one of us, including me also. Thanks all. Good night. Have a wonderful weekend ahead. Stay safe. Stay inside. Enjoy with your family. Thank you so much for joining.